Hey everyone, what's up? I'm Chef Aruna from Truffle Nation Baking Academy, where we help aspiring bakers just like you to become professional pastry chefs. और आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही simple and easy shake that you can make in under just 10 minutes. This recipe is so good that you can even add it to your cafe bakery menu. I'm sure you have already guessed it. Today we'll be making a thick, scrumptious chocolate brownie shake. So let's start the recipe. But before that, make sure that you subscribe to our channel so that you guys can stay updated with all our upcoming videos. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ब्लेंडर में ब्राउनी डालेंगे। उसी के साथ चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम एंड मिल्क डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पे आप ब्राउनीज की जगह ओरियोज भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा शेक तैयार है। अब हम इस टॉल ग्लास में चॉकलेट सिरप रैंडमली ड्रिजल करेंगे और शेक को इसमें पोर कर देंगे। If you like this recipe, then I'm sure you'll like my other refreshing shake video that is Pan Shots, link for which is in the description area below. Now for decorating this, we'll pipe whipping cream on top and drizzle some chocolate syrup as well. लास्टली हम इसके ऊपर स्मॉल पीसेस ऑफ ब्राउनी प्लेस कर देंगे। एंड विद दिस हमारा ब्राउनी शेक तैयार है। आई रियली होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई। And if you guys like this recipe, then do hit the like, subscribe and the share button, and don't forget to hit the bell icon to stay updated. I'll be back with another recipe. Till then, keep baking.